Sudeepa, over to you. Okay, ma'am. Thank you. Good afternoon, everybody. This is Shrutika Ghosh, Admin Officer of WB SAP and CS, currently detailed at PCOMCH, Kolkata. Uh, Today, we have a distance learning session. Our speaker is Dr. Somjeet Jana. He completed his MBBS from Medical College and Hospital, Kolkata. Then he finished his MD from ZGS Medical College, KEM, Mumbai, in pediatric medicine. Currently, he is working as senior resident in the Department of Pediatrics of Medical College and Hospital, Kolkata. Now, I will give the speaker to Sir to enlighten us on today's topic. Thank you, sir. Good afternoon, everybody. Is it audible? Yes, sir. Okay. So now I will start today's discussion, that is on gastrointestinal disorders in children living with HIV. So gastrointestinal disorders are among the most frequent complaints in patients living with HIV infection. Among the GI infection, the most common complaints are diarrhea, dysphagia, odynophagia, nausea, vomiting, weight loss, abdominal pain, any anorectal disease, jaundice, hepatomegaly, and GI bleed. Now, the evaluation of these GI symptoms is usually difficult because they are non-specific signs and symptoms that could be involved due to other systems also. So we will be looking the gastrointestinal disorders one by one. So we can broadly categorize it into three broad categories. One is oral pathology, second is diarrhea and other intestinal parasites, and third is the anal lesions. Now we will see in details each of the three. Now in the oral pathology, we can subdivide this oral pathology into broadly into 5 types. It can be candidiasis, which can be either oral candidiasis or esophageal candidiasis. The next is the oral ulcers. Third is the Kaposi sarcoma. Fourth is angular stomatitis, and fifth is the necrotizing gingivitis. Now in candidiasis, the first one is the oral candidiasis. Now candidiasis is one of the most common infection to present in children living with HIV. Now approximately 30% of the children living with HIV present with some sort of candida infection. Now generally this oral candidiasis is caused by an yeast called Candida albicans. It most commonly occurs in HIV negative people such as in infant, the elderly who have uncontrolled severe diabetes, or the persons on prolonged antibiotic therapy, or in the patients receiving high dose systemic corticosteroids, immunosuppressants, or any cytotoxic drugs. Now, in patient living with HIV, if the patient or the child is having the oral candidiasis, it is a pointer that there is some advanced immunodeficiency with persisting oral thrush, which is qualifying it as a stage 3 disease. Now, this is the picture of the oral candidiasis, that is the oral thrush. Now, I will describe in the next slide. Now, you can see the picture, that is white plaque-like material in the oral mucosa or inside the lips. So, what is the clinical presentation of this oral candidiasis? It is commonly seen as a white patch, and the characteristic of the patch is that it can be easily removed with any tongue depressor or any material, and it also has a reddish border. Now this removability of this white patch distinguishes it from the oral leukoplakia. So in the oral hairy leukoplakia cannot be removed by any tongue depressor, but this oral candidiasis can be scraped off by the tongue depressor or any other material. So the involvement wise, these mostly involve the oral mucosa, pharynx, and the inner side of the lips. Now, 4 clinical types of oral candidiasis are generally seen, like pseudomembranous, that is the oral thrush. Either it can be red type, that is erythematous, that is atrophic. It can have minor presentation like angular cheilitis and hyperplastic. Now, generally in these conditions of oral candidiasis, the swallowing is frequently painful, but just in the back of the throat it is visible, not lower down the throat or not in the sternum.
Now, how can we diagnose this oral candidiasis? Now, oral candidiasis is usually diagnosed on clinical basis based upon the characteristic, and just I have said that it can be removed by tongue depressor or not. But and as I have said, the oral hairy leukoplakia, the white flakes of oral hairy leukoplakia cannot be scraped off, but the oral candidiasis, it can be scraped off. If the clinically you are not sure, if the laboratory confirmation is required, then the scrapings can be examined microscopically for the any yeast or hyphal forms, and the culture also can lead the candida that is positive. Okay, so either we can confirm it by microscopically, where we can see the yeast or the hyphae, or in the culture that can yield candida albicans or any other species. Okay, so what is the treatment? So treatment in the milder forms, we can give nystatin oral suspension, that is 1 ml, switched around the mouth for few minutes, and then it can be swallowed. It is generally applied 4 times a day for 5 days, and generally it cures it. Alternatively, if it is not cured, we can also apply tropical 1% cotrimazole as a mouth paint. But if the oral thrush persist after local application of these ointments, then we have to give oral fluconazole. In the children, it is in the dose of 6 mg per kg per day, generally for 1 week. In 1 week, the most of the oral candidiasis generally means cured by this type of treatment. And now bit severe form of this oral candidiasis, it is the esophageal candidiasis. So the oral candidiasis was a WHO clinical stage 3 condition, but esophageal candidiasis is a WHO clinical stage 4 condition. It is usually diagnosed clinically based on the presence of oral candidiasis and associated symptom, that is swallowing difficulty or painful swallowing. So this is the main difference between the two. So in oral candidiasis only we can visually look for the oral white plaques that is inside the mouth or oral mucosa, but there is no swallowing difficulty. But when this oral candidiasis progresses and also involve the esophagus, then along with the oral candidiasis we are also getting the symptoms of swallowing difficulty. So this is the main differentiating factor. But if we want to confirm it, then we can do endoscopic examination, which will also reveal the white plaques in the esophagus, and from that we can take the scraping and confirm it by either microscopy or by culture. So here the involvement of soft palate and posterior wall of the pharynx on oral examination may give a clue. So so in this picture we can see the endoscopic view of the esophageal candidiasis. Here through endoscope we can see the parts of the esophagus has been occupied by white plaques, which generally signify the esophageal candidiasis. So, like I have said, in the clinical presentation, it is the pain in the throat on swallowing, that is odynophagia. Due to difficulty in swallowing, the patient will also be having weight loss. And the children, unlike adult, often experience nausea and vomiting. And children with esophageal candidiasis may also present with dehydration or weight loss. Now, classical symptoms and signs of esophageal candidiasis may be absent in children, particularly those who are receiving ART. So, diagnosis, as I have said, we can visibly diagnose by looking through the endoscope, or the definitive diagnosis requires direct histopathological demonstration of the candida yeast or by fungal culture and speciation. So it is bit severe form than oral candidiasis. So in this we have to give oral fluconazole. The dose is 6 mg per kg per dose on day 1, and the maintenance dose is 3 to 6 mg per kg per dose for 4 to 21 days. Generally, in the first 1 week, we are giving fluconazole, and then we will revisit the if the treatment is effective or not. If the treatment is not effective after 1 week, or means the disease is not responding to fluconazole, then we have to treat for herpes simplex virus with oral acyclovir. So this is the adult dose. This is not the pediatric dose, and the majority of those. So the one category can be
Those who are not responding with fluconazole can be herpes simplex virus. The next one is the majority of those can also have CMV related esophagitis, which will also develop CMV retinopathy as well. So if we are not sure about the diagnosis, we can uh, go for the eye checkup and look for any retinitis is present or not. So if the retinitis is present along with esophagitis, it may give a clue that it might be a CMV related esophagitis, and we will actively diagnose for, means look for CMV retinitis and esophagitis, especially if the CD4 count is less than 100. And the treatment for CMV related esophagitis is vanciclovir, and alternatively is ganciclovir. And and we have to also ensure effective ART treatment is being taken after the screening for TB. So we have looked for the two most important symptoms, that is in the oral pathology, that is oral candidiasis and the esophageal candidiasis. So now the third common entity is angular stomatitis. So generally the angular stomatitis presents as inflamed and painful cracks at the corner of the mouth, and that is usually caused by candida and can also be caused by iron deficiency and occasionally any bacteria. So it is, the treatment is very simple. We have to apply 10 days of antifungal cream, local cream, that is cotrimazole, or even nystatin drops can also be rubbed in the cracks, and generally it responds to this treatment. Now we are looking for the fourth category, that is oral ulcers. Now broadly the oral ulcers can be in these children living with HIV can be due to three main diseases. The first is the aphthous ulcer or canker sores. So one of the more ulcers on the, how this aphthous ulcer present, it presents as one or more ulcers in the mucosa of the mouth, or it can be in the inner lips or sometimes in the tongue. The cause is generally unknown, but it is presumed that it is a viral etiology. The ulcers in aphthous ulcers are generally persistent and very painful, and especially presents in people living with HIV with low CD4 count. So it needs no other treatment. It is generally goes off with effective ART treatment, and we have to ensure that the child is taking ART in a proper dose. Now, the second is the herpes simplex virus associated oral ulcer. These are generally present as shallow ulcers or blisters that are also painful, extensive, and these are often recurrent, and they can also present as a group like vesicles in the lips. So in the treatment, what we have to do, we have to avoid the acidic foods. For pain relief, we can give paracetamol, codeine, or tramadol. And in the treatment option, we have acyclovir, that is for the children, that is 15 mg per kg per dose. We have to give 5 times per day for 7 to 10 days. The maximum dose is 200 mg per kg. Generally, the tropical acyclovir is ineffective. That is not much of importance. And the third one is the syphilis. So, if we see the three ulcers, this syphilis ulcer is generally painless, which can differentiate it from the other two. So, the ulcer of the primary syphilis and canker look very similar, but the most important differentiating factor is it is often painless. And to confirm it, we can do the VDRL testing. And for the treatment of syphilis, it is 2.4 million units intramuscular weekly for 3 weeks. So here we can see the pictures of the three ulcers. So in the aphthous ulcer, we can see the canker sore in the tongue, and in the herpes simplex we are seeing that the group like vesicles often involving the lips, and this is the syphilis picture, but not in the oral. It is in the other part of the body. And now the fifth one is the Kaposi sarcoma. So how the Kaposi sarcoma usually present? It usually presents with purplish fleshy swelling on the roof of the mouth. So initially the ulcers were presenting in the
either in the tongue or oral mucosa or in the lips, but Kaposi sarcoma generally presents as a swelling, not ulcer, on the roof of the mouth or gums, and which often bleed. If Kaposi sarcoma is present on the palate or oral cavity, it may also indicate that pulmonary or gastrointestinal tract may also be involved. So we have to investigate with a chest X-ray, especially if the respiratory symptoms are present. Then we have to give the order a chest X-ray also. And if the GI manifestations are there, then often it uh, presents with anemia also. So the diagnosis is usually clinical, and the treatment wise, as it is a WHO clinical stage 4 disease, it is a severe disease. In this, we have to start antiretroviral therapy immediately, and if the patient is already on ART for more than 6 months, then we have to evaluate for treatment failure, and based on that we have to start on second line agents. सो मैंने अब तक जो बोला, तो मैंने अब तक ये ओरल पैथोलॉजी का जो 5 चीज़ है ये डिस्कस किया. उसमें पहला था कैंडिडियासिस, जिसमें आइदर ये ओरल कैंडिडियासिस हो सकता है या इसोफिजियल कैंडिडियासिस हो सकता है. कैंडिडियासिस बहुत ही कॉमन है HIV में, जो बच्चों को HIV है. अभी ओरल कैंडिडियासिस में सिर्फ सफ़ेद कलर का वैसा आपको थ्रस्ट टाइप दिखाई देता है, लेकिन इसोफिजियल कैंडिडियासिस में मुंह के साथ साथ गले के अंदर भी आपका वो सफ़ेद कलर का ऐसा एंडोस्कोपी में दिखाई दे सकता है. ओरल कैंडिडियासिस का ट्रीटमेंट कम टाइम के लिए लगता है, जनरली 7 दिन तक सिर्फ ट्रॉपिकल एप्लीकेशन जैसे कोट्रीमोक्साजोल ये सब ऑइंटमेंट लगाने से हो जाता है. अगर नहीं होता है तो हमको फ्लूकोनाजोल देना भी पड़ सकता है 6 mg पर kg पर डे डोज से. लेकिन अगर इसोफेजियल कैंडिडियासिस है तो ट्रॉपिकल एप्लीकेशन से ठीक नहीं होता है, तो उसमें हमको ओरल फ्लूकोनाजोल देना पड़ता है, लेकिन वो 21 दिन तक भी देना पड़ सकता है क्योंकि वो उससे थोड़ा सा सीवियर है. ये एंगुलर स्टोमाटाइटिस में हमने देखा, ये जनरली मुंह के साइड में थोड़ा छाले जैसा हो सकता है, तो ये इसमें भी ओरल कॉट्रीमाजोल लगाने से जनरली ठीक हो जाता है. और ओरल अल्सर में हमने 3 टाइप का ओरल अल्सर देखा. एक है एप्थस अल्सर, जो जनरली मुंह में छाले जैसा प्रेजेंट करता है और जो पेनफुल होता है, दर्द देता है, और इसमें जनरली ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट नहीं लगता है, सिर्फ ART से ही ठीक हो जाता है. लेकिन जो हर्पिस सिम्प्लेक्स होता है वो थोड़ा सा और गहरा छाले जैसे प्रेजेंट करता है, और इसमें हमें एसाइक्लोविर देना पड़ता है, जो बच्चों में 15 mg पर kg पर डोज से 5 दिन के लिए, दिन में 5 बार 7 से 10 दिन के लिए दिया जाता है, और उसके साथ पेन किलर भी देना पड़ सकता है, ये इतना पेनफुल होता है. और जो सिफिलिस होता है उसमें क्या, उसमें पेन नहीं होता है, सिर्फ छाले के साथ प्रेजेंट करता है, और उसमें हम VDRL करके कॉन्फर्म कर सकते हैं. और ट्रीटमेंट में हम बेंजाथिन पेनिसिलिन 2.4 मिलियन यूनिट्स इंट्रामास्कुलर 3 वीक के लिए देते हैं. सो ये तीनों जैसे मैंने बताया, 3 आपका अल्सर है, एप्थस अल्सर, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का अल्सर और सिफिलिस का अल्सर. अच्छा, कापोसिस सार्कोमा जैसे मैंने बताया, इसमें अल्सर टाइप नहीं होता है, इसमें एक बड़ा स्वेलिंग, जो पर्पल कलर जैसा स्वेलिंग मुंह के ऊपर के हिस्से में होता है, और कभी कभी गम्स में भी हो सकता है. तो ये अगर है तो हमें याद रखना पड़ेगा कि छाती में या पेट में भी इसका इन्फेक्शन रह सकता है. तो जो बच्चे को अगर बाई चांस सांस का तकलीफ होता है तो उसमें तो हमें एक्सरे करके इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा. और कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चे में डायरेक्ट एनीमिया से प्रेजेंट करता है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि उसका पेट से कुछ खून वगैरह, ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है. तो इसमें क्या ट्रीटमेंट के हिसाब से क्या है, ये ART हमें बहुत पहले से ही मतलब इमीडिएटली चालू करना पड़ेगा. 6 महीना ART देने के बाद भी हमें अगर लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें फिर से वायरल लोड का टेस्ट करना पड़ेगा, और अगर देखें कि वायरल लोड लगातार कमी है तो हमें सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन ट्रीटमेंट ART का मतलब एड्स का देना पड़ेगा.
And जो लास्ट रह गया, that is necrotizing gingivitis. It is also a WHO clinical 3 condition. Here it only presents with inflammation of the gums, that is gingivitis, and may also lead to tooth loss, severe pain, and foul smelling breath. So the management is oral hygiene, antiseptic mouthwashes, and we can also give metronidazole, which is in the dose of 10 to 15 mg per kg, three times daily for 7 days. And if there is severe pain, so we can give paracetamol or codeine. And we have to mainly ensure that the child living with HIV is on effective ART. So ये जो छठवा जो ये है, ये नेक्रोटाइजिंग जिंजिवाइटिस जो है, ये WHO स्टेज 3 में आता है. इसमें सिंपल सिर्फ गम्स का स्वेलिंग होता है और कभी कभी टूथ लॉस और पेन रह सकता है. तो अगर बहुत पेन है तो हमें पेन किलर के हिसाब से पैरासीटामोल लेना पड़ेगा, और नहीं, और उसके साथ साथ हमें मेट्रोनिडाजोल 10 mg पर केजी पर डे से पर डोज से 3 बार करके 7 दिन के लिए देना पड़ेगा. So we have completed the first broad category, that is oral pathology. Now we will go for the second broad category, that is diarrhea and other intestinal parasites. So diarrhea is nothing but defined as having 3 or more loose stools per day. So for children, we are saying that an increase in stool frequency twice the usual number in infants, or thrice or more loose stools per day in older children. So it is generally defined as a change in consistency and frequency of stool more than 3 times a day, generally in the older child. So, and if there is associated visible blood in the stool, it is termed as dysentery. So only loose stool, that is diarrhea, that is more than 3 times a day, and blood along with stool, it is dysentery. So what is acute diarrhea, what is persistent diarrhea, and what is chronic diarrhea? So acute diarrhea is the diarrhea which starts acutely but presents less than 2 weeks, and persistent diarrhea is the diarrhea which starts acutely and persists beyond 2 weeks. And what is chronic diarrhea? Chronic diarrhea is the diarrhea which is insidious in onset, that is not acute onset, and is persists beyond 2 weeks in duration. So now the diarrhea can be categorized as either inflammatory or non-inflammatory. So what is inflammatory diarrhea? The inflammatory diarrhea occurs when there is the invasion of pathogen in the wall of the large bowel, causing an immune response and mucosal bleeding. And in the non-inflammatory diarrhea, there is no means pathogen invasion. There is only means the pathogen only invades the superficial layer and mainly cause the secretions of water and electrolytes in the lumen. So इसमें हमने देखा कि जो डायरिया जो होता है, अगर बच्चों में, अगर छोटा बच्चा है 1 साल के नीचे, तो वो जितना बार स्टूल पास करता है उससे अगर दुगना कर रहा है, या अगर कोई बड़ा बच्चा है वो दिन में 3 बार से ज़्यादा कर रहा है और उसका स्टूल कंसिस्टेंसी लिक्विड है, नॉट सॉलिड और नॉट सेमी सॉलिड, लिक्विड कंसिस्टेंसी है, तो उसको हम जनरली डायरिया करते हैं. और अगर लूज स्टूल के साथ ब्लड भी आ रहा है तो उसको हम डिसेंट्री कहेंगे. अगर डायरिया एक्यूट मतलब अचानक से स्टार्ट होता है और 2 वीक से ज़्यादा रहता है तो उसको हम परसिस्टेंट डायरिया कहते हैं. और अगर डायरिया धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, मतलब बहुत अचानक से नहीं, और 2 हफ्ते से ज़्यादा रहता है, उसको हम क्रॉनिक डायरिया कहते हैं. तो डायरिया 2 कारण से हो सकता है, एक है इन्फ्लामेटरी डायरिया और दूसरा है नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया. इन्फ्लामेटरी डायरिया में जो जंतु होता है वो हमारा बावेल को इन्वेट करता है, उसकी वजह से डायरिया होता है. और जो नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया है उसमें जो जंतु है वो उतना ज़्यादा फैलता नहीं है, सिर्फ ज़्यादा पानी और इलेक्ट्रोलाइट का सिक्रेशन से वो डायरिया होता है. So this is the classification of diarrhea as I have told earlier. That is acute diarrhea, which is acute in onset and less than 14 days. There is persistent diarrhea, which is acute in onset but last more than 14 days. Chronic diarrhea, which is insidious in onset and last more than 14 days. And acute dysentery, which is acute onset, along with that visible blood is also there.
Now, if we classify the dehydration status of this diarrhea, we can classify into three types. That is no dehydration, some dehydration, it is a printing mistake, some dehydration, and severe dehydration. So, what is no dehydration? The child will be well and alert. There will be tears will be present. The mucous membrane will be moist, and the child will be drinking normally, and the skin pinch will be normal. So in this no dehydration, we generally plan as plan A, that is home-based WHO ORS treatment. Now in the second, that is some dehydration, the child is generally restless and irritable. There can be sunken eyes and tears are generally absent. There can be dry mucous membrane and the child generally drinks eagerly and the skin pinches goes slowly. In this, we generally treat as Plan B, that is hospital-based WHO ORS. In Plan A, there was home-based WHO ORS treatment. In Plan B, it is hospital. Means we have to monitor the child after hospital admission, but we will give the WHO ORS only. And the third is the severe dehydration. In this, the child will be lethargic and or maybe unconscious also. There can be very sunken eyes and the eyes will be dry, very dry mucous membrane, and generally the child drinks very poorly and the skin pinch goes very slowly. So in this also we can give hospital based treatment with ORS, but these children may generally also require IV therapy for the means uh, isotonic fluid through intravenous route. So now if we look for the etiology of the diarrhea in children living with HIV, we can broadly classify into acute diarrhea, chronic diarrhea. In acute diarrhea, as I have told, acute inflammatory and acute non-inflammatory. In the acute inflammatory diarrhea, it can be caused by bacterial enteric infections like Shigella, Salmonella, Campylobacter, E. coli, and Clostridium, or it can be either by parasites like amoebiasis or viruses like cytomegalovirus. And in acute non-inflammatory diarrhea, it is generally caused by viruses like rotavirus, enterovirus, norovirus, and parasites like giardia. So in the non-inflammatory diarrhea acute, there is no bacterial pathogen. It is the main difference. And now in the chronic diarrhea, it can be chronic non-inflammatory diarrhea, which presents as large volume watery stools, and generally it is caused by coccidian parasites like Cytoisospora, Cryptosporidium, Microspora, Cyclosporidium, or can be by Giardia or Strongyloids. And in the persistent diarrhea in children living with HIV, there can be it can be due to malnutrition, it can be due to pathogenic E. coli, generally the enteroaggressive type or enteroadherent type, and the prolong it can be also this persistent diarrhea can be also due to prolongation of an acute diarrhea manifestation of cow's milk protein allergy, or it can be also due to antibiotic associated diarrhea due to bacterial overgrowth or cryptosporidium infection. Now, the other causes are generally Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium avium complex. It can be also caused by cytomegalovirus. It can be caused by parasitic infection like strongyloids, giardia, and non-infectious causes like drug associated like lopinavir or ritonavir associated, or due to Kaposi sarcoma also. So डायरिया का क्लासिफिकेशन में हम मैंने जैसे बताया चार क्लासिफिकेशन होता है. एक है एक्यूट डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया, क्रॉनिक एंड एक्यूट डिसेंट्री. एक्यूट डायरिया में डायरिया अचानक से चालू होता है जो 14 दिन से कम के लिए रहता है. परसिस्टेंट मतलब वही जो एक्यूट डायरिया चालू हुआ था वो 14 दिन से ऊपर तक रह रहा है. और क्रॉनिक डायरिया क्या है, अचानक से नहीं चालू हुआ था, धीरे धीरे ही चालू हुआ था और वो 14 दिन से ऊपर रह रहा है. और डिसेंट्री क्या होता है, उसमें डायरिया एक्यूट ऑनसेट ही चालू होता है लेकिन उसके साथ ब्लड भी पाया जाता है. तो ये चारों टाइप को हम सीवियरिटी के हिसाब से जो जैसे बच्चा आता है हमारा इमरजेंसी में, हम तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं. एक है नो डिहाइड्रेशन, मतलब
बच्चे को कोई डिहाइड्रेशन नहीं है, बच्चा एकदम अच्छा है, खेल रहा है, उस नॉर्मल आंसू निकल रहा है, बच्चा पानी भी अच्छे से पी रहा है और स्किन पिंच भी नॉर्मल है, तो इसमें इस बच्चे को हम घर भेज सकते हैं और घर में हम ओआरएस का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये है प्लान ए। दूसरा जो है सम डिहाइड्रेशन, जिसमें क्या होता है बच्चा थोड़ा रेस्टलेस और इरिटेबल होता है, बच्चे का आंसू थोड़ा कम आता है, म्यूकोसा जो हम देखते हैं वो थोड़ा ड्राई होता है और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहता है। तो ये होता है प्लान बी, इसका मैनेजमेंट, जिसमें हम हॉस्पिटल में रख के बच्चे को ओआरएस देते हैं। और तीसरा जो सबसे सीवियर होता है वो है सीवियर डिहाइड्रेशन, जिसमें बच्चा बिल्कुल ही लेथार्जिक हो जाता है, कभी कभी अनकॉन्शियस भी हो सकता है, उसका आंख बहुत ही अंदर चला जाता है और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है बहुत ही ड्राई होता है, बच्चा ठीक से पानी नहीं पी पाता है और स्किन स्पिन भी बहुत ही स्लो होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, प्लान सी करते हैं, जिसमें हम हॉस्पिटल में रख के ओआरएस दे सकते हैं, लेकिन बहुत सीवियर हुआ तो आईवी फ्लूइड भी हमें देना पड़ सकता है। तो इसमें हमने डायरिया का कॉजेज देखा, जो मेन कॉजेज होता है उसमें जो एक्यूट डायरिया है उसका दो मेन कैटेगरी है, जैसे एक्यूट इन्फ्लामेटरी डायरिया जो कोई इन्फ्लामेशन की वजह से हो रहा है, जो मैंने पहले बताया था, और दूसरा जो होता है एक्यूट नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया जिसमें हल्का इन्फेक्शन है, ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है। तो जो एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन डायरिया होता है उसमें मेनली जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिसमें सीगेला, साल्मोनेला, कैंपाइलोबैक्टर, इकोलाई एंड क्लोस्ट्रीडियम ये ज़्यादातर पाया जाता है। पैरासाइट है तो एमीबियासिस हो सकता है, एंड वायरसेस है तो साइटोमेगालो वायरस हो सकते हैं। और जो नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया है उसमें जो बैक्टीरिया ज़्यादातर नहीं पाया जाता है, उसमें मेनली वायरस एंड पैरासाइट होता है। वायरस में मेनली आपका रोटा वायरस, एंटेरोवायरस, नोरोवायरस, एंड पैरासाइट में जियार्डिया। तो ये हो गया आपका एक्यूट डायरिया। क्रॉनिक डायरिया में क्या होता है, क्रॉनिक डायरिया में क्रॉनिक तो इन्फ्लामेटरी नहीं होता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन होगा तो वो एक्यूटली प्रेजेंट करेगा। क्रॉनिक डायरिया में क्रॉनिक नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया होता है, जो मेनली कॉक्सीडियन पैरासाइट जैसे साइटोआइसोस्पोरा, क्रिप्टोस्पोरिडियम, माइक्रोस्पोरा, साइक्लोस्पोरिडियम ये सबसे होता है, या फिर जियार्डिया से भी हो सकता है, या फिर स्ट्रोंगाइलॉइड्स। और जो परसिस्टेंट डायरिया होता है जो एक्यूटली स्टार्ट होकर 14 दिन के बाद तक रहता है, उसमें मेन कारण पाया जाता है बच्चे का मेल न्यूट्रिशन, कभी कभी इकोलाई से हो सकता है, कभी कभी क्या होता है काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी जो बच्चे को रहता है वो उसमें परसिस्टेंट डायरिया हो जाता है, या फिर कभी कभी एंटीबायोटिक की वजह से डायरिया परसिस्ट कर सकता है, या फिर क्रिप्टोस्पोरिडियम इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ये होता है मेन कॉज ऑफ डायरिया। ये छोड़ के जो अनकॉमन कॉज मतलब होता है लेकिन कम पाया जाता है, वो होता है माइकोबैक्टीरियम टीबी एंड माइक्रोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, या फिर साइटोमेगालो वायरस, या फिर पैरासाइट में हम देख सकते हैं स्ट्रोंगाइलॉइड्स इन्फेक्शन और जियार्डिया इन्फेक्शन। और नॉन इन्फेक्शियस केस में हम जनरली लोपिनाविर, रिटोनाविर की वजह से डायरिया हो सकता है, या फिर कापोसिस सार्कोमा। अगर जैसे मैंने बताया था अगर जीआई ट्रैक्ट इन्वॉल्व हुआ है तो कापोसिस सार्कोमा से भी डायरिया हो सकता है। सो इसमें जो सो इन दिस causes of diarrhea, now we will see in details the bacterial enteric infections. So what is the clinical manifestation? So the risk of bacterial diarrhea is greatest in individuals with clinical AIDS or less than 200 CD4 count. Okay, so the three major clinical syndromes of infection with gram negative bacteria are, so the means the child having diarrhea due to gram negative bacteria can present with mainly three symptoms, like self-limited, it can have self-limited gastroenteritis, it can have more severe and prolonged diarrheal disease potentially associated with fever, bloody diarrhea means dysentery and weight loss, or it can also have bacteremia associated with extra intestinal involvement and with or without concurrent or preceding GI illness. So the relapses in infection with salmonella and other gram-negative bacterial enteric pathogens are after appropriate treatment have been well documented in children living with HIV. So generally
These are the three main clinical syndromes with which the bacterial enteric infections present, and the risk is either in clinical AIDS or less than 200 CD4 count. So how we will diagnose these bacterial enteric infections? It can be diagnosed either by culture of the stool and the blood, that is blood culture and stool culture. Blood culture should be obtained from patients with diarrhea and fever if possible. Endoscopy with biopsy may also be required if other etiologies other than bacterial enteric infections like cryptosporidiasis, microsporidiasis, CMV, or non-infectious causes of GI symptoms occur, and if the stool culture failed to yield any of the enteric bacterial pathogens, then we have to do the diagnostic evaluation for STDs. सो यहाँ पे हमने देखा कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अगर डायरिया हो रहा है तो वो 3 टाइप से प्रेजेंट कर सकता है। तो उसमें सेल्फ लिमिटेड मतलब सिंपल गैस्ट्रोएंटेराइटिस से मतलब सिंपल डायरिया से भी प्रेजेंट कर सकता है, उससे भी थोड़ा सीवियर डायरिया जिसमें उसके साथ फीवर, उसके साथ ब्लड वेट लॉस उसके साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, और डायरिया छोड़ के दूसरा ऑर्गन इन्वॉल्व करके भी प्रेजेंट कर सकता है। तो ये सीवियरिटी के हिसाब से 3 टाइप से प्रेजेंट कर सकता है। और इसका डायग्नोसिस हम जनरली कैसे करते हैं? डायग्नोसिस के लिए हम पहले स्टूल कल्चर एंड ब्लड कल्चर भेजते हैं। तो स्टूल कल्चर एंड ब्लड कल्चर में अगर बैक्टीरिया मिल गया तब तो डायग्नोसिस हो जाता है। अगर बाई चांस स्टूल कल्चर और ब्लड कल्चर में डायग्नोसिस नहीं आता है तो हमें एसटीडी के बारे में सोचना पड़ सकता है। और जनरली हम एंडोस्कोपी विथ बायोप्सी किस में करते हैं? जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन छोड़ के हम अगर दूसरा कुछ सोचते हैं जैसे क्रिप्टोस्पोरिडिया, माइक्रोस्पोरिडिया, सीएमवी और अदर एनी नॉन इन्फेक्शियस कॉज, तो उसमें हम एंडोस्कोपी विथ बायोप्सी कर सकते हैं। So what are the treatment options for this bacterial enteritis? So in the general consideration, we have to give either by oral or IV rehydration therapy depending upon the conscious level of the patient. Generally, the anti-motility agents are generally avoided in the inflammatory diarrhea, because if the diarrhea is not it stays inside the body, means the pathological agent stays inside the body, it can lead to bacterial sepsis and septicemia. So we do not prefer anti-motility agents to stop the diarrhea. Now, diagnostic fecal specimens should be sent prior to starting the empiric antimicrobial therapy. If the stool sample is obtained, antibiotic susceptibility should be performed to confirm the antibiotic choice, and after the report, the empirical treatment should be adjusted based upon the culture report. So, in the empiric treatment of the bacterial enteric infections, what we are giving, generally the empiric treatment we are giving for the children living with HIV who have clinical diarrhea more than 6 loose stool per day, or the child who are having persistent diarrhea but no severe clinical signs. So in these two category of children living with HIV, we generally prefer giving empirical treatment. So what is the preferred empirical treatment? That is the ciprofloxacin, and alternatively we can also give ceftriaxone or cefotaxime. Now, if we see the treatment of individual bacterial pathogens, we can see that in the treatment of salmonellosis, means salmonella causing diarrhea or dysentery, here also the preferred therapy is ciprofloxacin, and alternatively we can also give levofloxacin, moxifloxacin, then trimethoprim, sulfamethoxazole, or intravenously we can give ceftriaxone or cefotaxime. So, what is the duration of the therapy with bacteremia? So, if we see the duration of therapy, if the CD cell count is more than 200, then lesser days is required, like 7 to 14 days. But if the CD4 count is less than 200, then we have to give it for 2 to 6 weeks. Now, what is the treatment of CLHIV? So in the CLHIV, here also the preferred treatment is ciprofloxacin, and alternatively we can give the levofloxacin, moxifloxacin, trimethoprim, sulfamethoxazole, and azithromycin. Here the
duration of therapy is 7 to 10 days in gastroenteritis. If there is associated bacteremia, means blood culture is also positive, then you have to give for 14 days. And in recurrent infection, we have to give up to 6 weeks. So similarly, there is campylobacteriosis, then Clostridium difficile infection. The campylobacteriosis, it is similar to shigellosis only, like ciprofloxacin or azithromycin are the preferred therapy, and duration is also same, like gastroenteritis 7 to 10 days, bacteremia 14 days, and recurrent bacteremia 2 to 6 weeks. And in Clostridium difficile infection, we are generally giving the oral vancomycin for 10 to 14 days or metronidazole 3 times a day for 10 to 14 days. सो ट्रीटमेंट में हमने देखा कि जनरली हम बच्चे का डिहाइड्रेशन के हिसाब से हम उसको ओरल थेरेपी या आईवी थेरेपी देना पड़ सकता है। उसके साथ हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक देना पड़ेगा जो बैक्टीरिया के जो जैसा बैक्टीरिया हमें मिलेगा कल्चर रिपोर्ट से उसके हिसाब से। लेकिन कल्चर रिपोर्ट के पहले हम एम्पेरिकली कुछ एंटीबायोटिक चालू कर सकता है किस किस पेशेंट में, अगर बच्चे को क्लिनिकली सीवियर डायरिया है और अगर बाई चांस सीवियर डायरिया नहीं है लेकिन परसिस्टेंट डायरिया है तो उसमें भी 14 दिन से ऊपर, तो उसमें भी हम एम्पेरिकल थेरेपी चालू कर सकते हैं। तो जनरली हम एंटी मोटिलिटी एजेंट लाइक क्लोपेरामाइड ये सब हम जनरली प्रेफर नहीं करते, क्योंकि अगर इन्फेक्शन अंदर रह जाएगा तो उससे और ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो एम्पेरिकली हम कौन सा एंटीबायोटिक दे सकते हैं, हम प्रेफर्ड है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और उसके अलावा अगर आईवी देना है तो सेफ्ट्राक्सोन और सेफोटेक्सिम दे सकते हैं। अभी आप कल्चर रिपोर्ट के हिसाब से अगर कल्चर रिपोर्ट में साल्मोनेला आता है तो उसमें भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे और ऑल्टरनेटिवली लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, सेफ्ट्राक्सोन, सेफोटेक्सिम ये सब देंगे। ड्यूरेशन कितना होगा, अगर CD4 काउंट 200 से ऊपर है तो हम 7 से 14 दिन देंगे, अगर 200 से नीचे है तो 2 to 6 वीक्स देंगे। फिर हमारे सीगोलिसिस में क्या है, उसमें भी प्रेफर्ड ट्रीटमेंट सिप्रोफ्लॉक्सासिन ही है और ऑल्टरनेटिवली हम लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन देंगे। इसमें ड्यूरेशन क्या रहता है, अगर सिंपल गैस्ट्रोएंटेरिटिस है तो उसमें 7 से 10 दिन देंगे, अगर बैक्टीरियमिया है मतलब ब्लड में भी इन्फेक्शन फैल चुका है तो उसमें हम 14 दिन या उससे ऊपर तक दे सकते हैं, और अगर रेकरेंट इन्फेक्शन है तो हम उसमें 6 वीक्स तक देंगे। सिमिलरली सिगोलोसिस की तरह ही कैम्पैलोबैक्टीरियोसिस है, और लास्ट जो है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन जिसमें हम ओरल वैंकोमाइसिन देंगे। बच्चों में जनरली 10 to 20 मिलीग्राम पर केजी पर डोज 4 बार दिन में 10 से 14 दिन तक दिया जाता है। और उसके अलावा हम मेट्रोनिडाजोल वो भी ओरल, मतलब जो दोनों ही एंटीबायोटिक है ओरल देना पड़ेगा, तो उसमें भी मेट्रोनिडाजोल आपका 10 mg पर केजी पर डे करके 10 से 14 दिन तक दे सकते हैं। So this is also a generalized treatment of management of diarrhea in children living with HIV. So this is the sum up of the previous things. It is management of acute diarrhea has 4 major components like rehydration and maintaining hydration, as I have told, either by ORS or by IV fluid, then ensuring adequate feeding, then we are also giving oral supplementation of zinc, and then we have to early recognize the danger sign and treat the complications. Now, the children with no dehydration should be treated with WHO ORS and home available fluids to prevent dehydration, like I have told. So, the amount of ORS depends upon the dehydration status and age. So, if the age is less than 2 years, then 50 to 100 ml. Then, if the age is 2 to 10 years, then 100 to 200 ml. And if age is more than 10 years, then we can give ad-lib. So the apart from ORS, the home available fluids can also be given, uh, and along with vegetable or chicken soup with salt, and some unsalted fruits like plain water, water in which a cereal has been cooked, unsalted soup, yogurt drinks without salt, green coconut are also acceptable. So it is mainly uh, uh, for the
fluid management that we give prefer in diarrhea in children living with HIV. Now this is the management of dysentery in HIV, children living with HIV. In dysentery, we are giving the ORS and zinc supplementation, and along with that, the antibiotic is the main component. In simple diarrhea with dehydration, antibiotic may not be required, but we can give prophylactic antibiotic if there is prolonged diarrhea or clinical dehydration. But in dysentery, we must have to give antibiotic. So the antibiotic of the choice is IV ceftriaxone, that is 50 to 100 mg per kg per day for 3 to 5 days in sick child. And if the child is stable, we can give ciprofloxacin in the dose of 15 mg per kg per day in 2 divided days for 3 days, or oral cefixime. Oral azithromycin can be used for shigellosis, and if the children is having amoebic dysentery, then we can give metronidazole or tinidazole. If there is young children and presenting with blood in stool with persistent abdominal pain, we have to also suspect intersusception and evaluate accordingly. सो यहाँ पर हमने क्या देखा? पहला, इसमें हमने डायरिया का मैनेजमेंट देखा, इसमें हमने डिसेंट्री का मैनेजमेंट देखा. तो डायरिया में हम जनरली क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन को मैनेज करते हैं और फीडिंग को ठीक करते हैं. तो डिहाइड्रेशन के लिए हम जनरली घर में या हॉस्पिटल में WHO ORS दे सकते हैं. अगर 2 साल से छोटा बच्चा है तो 50 से 100 ml, अगर 2 से 10 साल का है तो 100 to 200 ml, एंड 10 साल से ऊपर है तो जितना ज़रूरत है उतना. और ये ORS के अलावा घर में जो राइस के साथ जो पानी होता है, या फिर योगर्ट ड्रिंक जो होता है, कोकोनट वाटर, ये सब भी दे सकते हैं ये डिहाइड्रेशन को करेक्ट करने के लिए. लेकिन ये सिंपल डायरिया में हम जनरली एंटीबायोटिक नहीं दे रहे, सिवाय 2 कंडीशन जो हमने पहले बोला था कि अगर सस्पेक्ट कर रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें डायरिया 14 दिन से भी ऊपर रह रहा है, या इतना सीवियर डायरिया है कि बच्चा डिहाइड्रेशन होकर शॉक में जा रहा है, तो उसमें हम एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्टिकली चालू कर सकते हैं. लेकिन अगर डिसेंट्री है तो उसमें हमें एंटीबायोटिक देना ही पड़ेगा ORS के साथ. तो एंटीबायोटिक का चॉइस जनरली क्या होता है? अगर बच्चा सिक है तो IV एंटीबायोटिक जिसमें हम सेफ्ट्रियाक्सोन और सेफोटेक्सिम दे सकता है. और अच्छा, अगर बच्चा स्टेबल है तो उसमें हम ओरल सिप्रोफ्लॉक्सासिन या ओरल सेफिक्सिम दे सकते हैं. अगर एमीबिक डिसेंट्री हम सस्पेक्ट कर रहा है तो उसमें हम मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल दे सकते हैं. और दूसरा चीज़ जो ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा पेट दर्द है, उसके साथ ब्लड आ रहा है स्टूल में, तो हमें इंटरससेप्शन के लिए ध्यान में रखना पड़ेगा. उसके लिए एक्सरे या USG करना भी पड़ सकता है. So now the atypical pathogens like cryptosporidiasis, so causing the diarrhea. In the cryptosporidiasis, the clinical manifestation is generally acute or subacute onset of watery diarrhea, which may be accompanied with nausea, vomiting, or lower abdominal pain. There can be transient diarrhea in typical patients with competent immune systems. The epithelium of the biliary tract and the pancreatic tract can also be infected with cryptosporidium, leading to sclerosing cholangitis and pancreatitis secondary to papillary stenosis, particularly among patients with prolonged disease and low CD4 count. So how can you diagnose it? It can be diagnosed by microscopic identification of the oocytes in the stool with acid fast staining or direct immunofluorescence. Or it can also be detected by antigen detection by ELISA technique or intestinal biopsy. So how it can be prevented? It can be generally they do not require uh, other specific treatment, but uh, the children in which the ART has been started early, they generally have lesser degree of these symptoms. But if the diarrhea is persistent, then we can add nitazoxanide, that is in the children doses 5 to 10 mg per kg, or paramomycin. And along with that, we have to give the oral or IV rehydration to decrease the dehydration.
इस यहाँ पे हमने देखा कि क्रिप्टोस्पोरिडिया कैसे प्रेजेंट करता है। जनरली क्रिप्टोस्पोरिडिया हम पहले नहीं सोचते हैं डायरिया के कारण, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा CD4 काउंट लो है और बहुत दिन से डायरिया रह रहा है तो हमें क्रिप्टोस्पोरिडियासिस भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी उसको डायग्नोसिस करने के लिए हम जनरली जो स्टूल में ओवासिस्ट पैरासाइट होता है वो भेज सकते हैं, या फिर एंजाइम लिंक्ड जो इम्यूनोक्रोमाटोग्राफी टेस्ट होता है, जो एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट होता है वो भेज सकते हैं। अगर किसी में भी नहीं आ रहा है, परसिस्टेंट डायरिया चल ही रहा है, तो हमको लास्ट में इंटेस्टिनल बायोप्सी भी करना पड़ सकता है। तो जनरली इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसे ORS या IV फ्लूइड देना पड़ेगा। ART तो बहुत पहले से ही चालू कर देना पड़ेगा, और अगर कंट्रोल नहीं है ART से भी तो हमें निटाजोनाइड या पैरामोमाइसिन देना पड़ सकता है। Next, it is a same type of organism like cryptosporidiasis, that is cryptoisosporiasis. The common clinical presentation is watery non-bloody diarrhea, which may be associated with abdominal pain, cramping, nausea, vomiting, or low-grade fever. The diarrhea can be profuse, prolonged, or generally seen in the immunocompromised patient, resulting in severe dehydration. And along with the severe dehydration, there can be electrolyte abnormality also, like hypokalemia or weight loss. In patients with cryptoisosporiasis, the acalculous cholecystitis and reactive arthritis has also been reported. So, how can we diagnose this report? It can be diagnosed by detecting isospora oocytes in the fecal specimen, or by modified acid-based acid-fast techniques. And detecting oocytes in the duodenal aspirate or mucus is very much confirmative of this disease. So, what is the treatment option for cryptoisosporiasis? We can treat either by trimethoprim sulfamethoxazole, or the dose for the trimethoprim sulfamethoxazole is 5 mg per kg per dose. Then we have to give initially for few days, but if there is no response or if the symptoms worsen, then we can double the dose. Then we have to look for few more days, and in the chronic maintenance therapy we have to give it orally 3 times weekly for longer duration. Now the third less common category, that is the anal lesion. So we have completed the oral pathology, then we have completed the diarrhea and intestinal pathogens. Now third is the anal lesions. So in the anal lesions we can get non-infective anal lesions like perianal hematoma, we can get thrombosed piles, we can get perianal abscesses, or we can get perianal fistula. And among the infective anal lesions we can get herpes simplex virus related anal lesions, and these are generally cluster of vesicles or shallow ulcers, like what we have seen in the oral pathology herpes simplex. Here also we can get the cluster of vesicles or shallow ulcers. Treatment is similar, that is acyclovir in the pediatric dose, like 10 to 15 mg per kg per day for 5 to 7 days. We can also get HPV lesions, like human papilloma virus lesions, which can generally present as warts, condylomata acumata, which is like typical cauliflower appearance, and it can also present as anal ulcer or sore, but it is also a pre-malignant condition which should be referred early for further management. And it is treated by locally available preparations like podophyllin. And the next is the proctitis. It is nothing but the patient presents with anal discharge or pain in the rectum, that is mild to moderate severity. And last is the syphilis. It generally present as primary canker, that is the painless ulcer, like we have seen in the oral ulcer, painless oral ulcer. Here also similarly painless anal lesions with raised edges, and which can also look like warts, which are seen in the HPV warts. So हमने ये जो तीसरा नंबर है, इसमें हमने
जनरली जो एनल लीजन्स होता है वो हमने देखा। तो एनल लीजन्स में क्या होता है, आइदर नॉन इन्फेक्टिव हो सकता है या इन्फेक्टिव हो सकता है। नॉन इन्फेक्टिव में क्या होता है, आइदर इसमें पेरिएनल हिमाटोमा मतलब थोड़ा ब्लड जमा हो गया ऐसा टाइप पाइल्स जैसा प्रेजेंट कर सकता है, या थ्रोम्बोस्ट पाइल्स जो ज़्यादा पेनफुल होता है, जो ज़्यादा स्वेलिंग होता है वैसा प्रेजेंट कर सकता है, या फिर पेरिएनल एनल ओपनिंग के आसपास एब्सेस की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है, या कभी कभी फिस्चुला की तरह भी डिस्चार्ज जिससे निकल रहा है वैसे भी प्रेजेंट कर सकता है। तो ये सब हो गया आपका नॉन इन्फेक्टिव एनल लीजन्स। इन्फेक्टिव एनल लीजन्स में जैसे ओरल लीजन्स का था, इसमें भी हार्पिस सिम्प्लेक्स जो क्लस्टर ऑफ वेसिकल्स की तरह प्रेजेंट कर सकता है एनल ओपनिंग के आसपास, या फिर एचपीवी लीजन्स जो जनरली वार्ड्स की तरह प्रेजेंट करता है, जो एक प्री मैलिग्नेंट लीजन भी है जिसके लिए हमें अर्ली रेफर करना चाहिए अगर एचपीवी जैसा वार्ड्स हमें दिखाई दे रहा है। ये जनरली लोकली अवेलेबल पोडोफाइलिन से ट्रीट हो सकता है। एंड प्रोक्टाइटिस जिसमें आपका एनल डिस्चार्ज और इचिंग या पेन हो सकता है। एंड सिफिलिस जैसे वो प्राइमरी कैंकर जो पेनलेस होता है जैसे हमने ओरल पैथोलॉजी में देखा, और कभी कभी ये वार्ड्स की तरह लुक दिखाई दे सकता है लेकिन पेनलेस होता है। तो ये आपका हो गया इन्फेक्टिव एंड नॉन इन्फेक्टिव एनल लीजन्स। So here I have completed today's topic, that is gastrointestinal disorders in children living with HIV. So anybody has any questions? Thank you so much, sir. So there's one question in the chat box. What is the status of rifaximin in pediatric patient with diarrhea? Instead of age, weight band calculation of rehydration fluid is better. What about addition of edible oil in food during pediatric diarrhea? Okay, so what is the status of rifaximin in pediatric patient with diarrhea? So rifaximin is often prescribed in patients with pediatric patients with diarrhea, but generally not used. Means empirically. Generally, empirically, we give the means the preferred is ciprofloxacin, and we generally manage the dehydration status. If after giving ciprofloxacin and if the culture is also negative, then we can try for rifaximin, but means it can be used but not used in means huge quantity. And the next question is, instead of age, weight based calculation of rehydration fluid is better. Yes, it is correct that instead of age, the means the child living with HIV can have the lower age, lower weight according to the age. So weight band is generally preferred. Like if a child is having 12 kg, but the child is having age of suppose 3 years, and the is having weight of 12 kg, then it is preferred that we are giving the fluid according to the weight. Like for the first 10 kg we are giving 100 ml per kg, then next 2 kg we are giving 50 ml per kg. So it is better to give according to the weight regardless of the age. And the third question is that what about adding edible oil in food during pediatric diarrhea? Generally we are not advising edible oil during the diarrhea. We are generally advising to give means the fluid means either ors or home based cooked food along with the water which is mixed in that. Generally in various child means in some child with diarrhea the edible oil may not be digested, so we are keeping it very simple. Either simple ors solution that can be available in the packet form, or can be home based cooked food along with the water that is mixed in it. So other than this, any question? So there are no more questions in the chat box. Kiran sir, can we give mic access to everyone? Any questions from the participants? Please feel free to unmute your mic. किसी को कोई सवाल पूछना हो तो अनम्यूट कर सकते हैं. So I don't think there are any questions. Thank you so much for the wonderful detailed session.
Okay, thank you, ma'am. So I think there is no more questions. So can I end here? Yes, sir. Yes. Thank you so much, sir. Thank you to all the participants for patient listening. We'll conclude the session now. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, Sudeepa.